हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रिदा एंड यू आर वाचिंग मी एंड ब्यूटीफाइंग। आई होप आप सब ठीक हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, दोस्तों का ख्याल रख रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है। खैर, आज हम करने वाले हैं पिंक या पर्पल। आज हम मैट पे जाने वाले हैं, हम कोई ग्लॉसी आई शेडो नहीं करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं कुछ मैट, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप कुछ मैट में करें, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ थोड़ा सा चेंज। और हमने ऑलरेडी अपनी स्किन को कर लिया है प्रेप एंड हमेशा की तरह हम स्टार्ट करने वाले हैं विद आई मेकअप, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे प्राइमर। कोई भी प्राइमर, आई एम यूजिंग लेस वाटर, आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी अपनी स्किन को प्रेप कर चुकी हूँ। प्रेप मीन्स मैं अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र यूज़ कर चुकी हूँ। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द प्राइमर। सो वी आर डन विद द प्राइमर। हमने प्राइमर अप्लाई कर लिया है अच्छे से अपनी आई पे। अब हम यूज़ कर रहे हैं मैक 25NC। इसके लिए हम मेरा एक स्पेसिफिक ब्रश फॉर माई आई, जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो हमने अपनी एप्लीकेशन कर लिया ब्रश से। अब हम इसे ब्लेंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। हम थोड़ी सी और बेस यूज़ करने वाले हैं। अगेन हम यूज़ कर रहे हैं मुसरत मिसबा का फेस पाउडर, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो वी आर डन विद दिस। मेक श्योर कि आपका जो ब्रश है वो क्लीन हो बिफोर यूजिंग द शेड्स। ओके, आई एम यूजिंग हुदा पैलेट और हम कुछ पिंक या पर्पल में करने वाले हैं, तो हम सबसे लाइट पिंक देखेंगे। हमारी रेंज में जो लाइट पिंक है हम उसको अप्लाई करने वाले हैं। सेम कलर को हम अपने आई लिड पे यूज़ कर रहे हैं। अब हम पर्पल को लेंगे और हमारे कॉर्नर्स पे अप्लाई करेंगे।
हमें अपने कॉर्नर्स पे पहले अप्लाई करना है और फिर हमें उसको ब्लेंड करना है हमारी क्रीज के साथ। ओके, वी आर डन विद दिस। अब हम उसमें पिंक को ऐड करने वाले हैं। So हमारा पिंक पर्पल is almost done, but I have something to show you. This is also a eyeshadows जो कि हम अप्लाई करेंगे। They are really dusty, तो वो थोड़ा स्प्रेड हो जाता है। हम हल्का सा ऐड कर रहे हैं इसमें। और बीच बीच में हम हमारा हुदा का पैलेट में से पिंक को भी अप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब हम इस किट में से पर्पल को यूज़ कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर कोई ये यूज़ कर रहा है तो दे नोस के हम दोनों से अपना आई मेकअप कर सकते हैं। इसके बाद आपके हाथ काफ़ी गंदे होने वाले हैं। हम हल्का सा पर्पल ले रहे हैं और इसको अपने कॉर्नर्स पे ऐड कर रहे हैं। हम पहले बनाएंगे अपने आईब्रोज। कोई भी ब्राउन्जर या कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं आईब्रो किट। हमने पहले लाइट शेड को पिक करना है और फिर हमने डार्क पर जाना है। सो ओके, वी आर डन। हम पहले अपने फेस को क्लीन करेंगे। अब हम यूज़ करेंगे हाइलाइटर को। आई गेस हमें आज सिल्वर करना चाहिए। व्हाट यू से? आज हम यूज़ कर रहे हैं सिल्वर, नॉट गोल्डन, हमारे मेकअप के साथ।
ठीक हो गया। उसके बाद हम जाएंगे अपनी लैशेस की तरफ। उससे पहले हम मस्कारा लगाएंगे। हमारा मस्कारा लग चुका है। अब हम जाएंगे लैशेस की तरफ। मस्कारा लगाने के बाद हम अच्छे से अपनी लैश पे ग्लू लगाएंगे। हम ज़्यादा ग्लू नहीं लगाएंगे, लेकिन प्रॉपर लगाएंगे। So we are done with our lashes and eyeliner. अब हम जा रहे हैं अपना अंडर आई मेकअप करने, जो कि मेरे ब्रशेस ऑलवेज मिक्स कर दिए मैंने और इतना मैस्करेड किया हुआ है। Again we will start with the lighter shade. उसके बाद हम थोड़ा सा डार्क यूज़ करेंगे। हमने पिंक अपने आंखों के नीचे अप्लाई कर लिया है। अब हम आज गोल्डन यूज़ कर रहे हैं अपने अंडर आई के लिए। हम अपने नीचे वाले आईलैशेस के लिए मस्कारा यूज़ करने लगे। हमारा आई मेकअप हो गया है कंप्लीट। अब हम जाएंगे अपने फेस की तरफ। मैंने ऑलरेडी अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। ओके, अब हम करेंगे हमारा कंसीलर। With the help of beauty blender हम इसे करेंगे ब्लेंड। अब हम करेंगे मैक यूज फॉर द फेस। सेम प्रोसेस, ब्रश से एप्लीकेशन हमारे फुल फेस पे अच्छे तरह से हम इसकी करेंगे एप्लीकेशन। ओके, अब हम यूज़ करने वाले हैं मिसरत मिसबा का फेस पाउडर। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी लैश लाइंस हैं और अगर आपके रिंकल्स हैं। अब हम यूज़ करेंगे कंटूरिंग पैलेट। मैं दूसरा ब्रश कर रही हूँ फॉर द नोज।
ओके, आज हम करेंगे कुछ थोड़ा चेंज फॉर द ब्लश ऑन। मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैम ग्लो के ब्रश ब्लश ऑन। Now we will use the highlighter, same Glam Glow. We are done with this. Now we will apply the lipstick, and before that we will apply outline. And we are done with our face. और इसको लगाने के बाद हम लगाएंगे ग्लैम ग्लो का सेम हाइलाइटर। And we are done. So we are done with this makeup. If you like it, just subscribe my channel, like my video and share it more. Take care of yourself, stay safe and stay healthy. Bye.